What are the variables in Python? What role play variables in Python? Hello everyone, this is Neelam Sharma. Welcome back to CodeTech Hub, your IT center. Today you are going to learn about variables. Variables play an important role in any programming languages. So you are going to learn about the variables. Before starting the video, please like, subscribe and hit the bell icon. In variables category, you can see the first feature variable assignment. वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करवानी है, so you have to use equals to sign. To create a variable, you just assign it a value and then start using it. It done with a single equals to sign. Variables type in a Python, you can see multiple types of variable. In other programming language, variable is initially declared to have a specific data type. Integer data type, float data type, string data type, डबल, केर, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स का प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होता है और उनके साथ ही हमको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है. लेकिन पाइथन में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस. Every time of data in a Python program is an object of a specific type or class. Once value has decided for a variable, it assigned to an object. Means आपने किसी भी नेम से एक वेरिएबल को क्रिएट किया है, so you can't change the value. You can't change the value. n की वैल्यू यहाँ 15 है, so always whenever you will run n variables, so the value always will print 50 only. Objective identity. Objective identity, that means here a equals to 100. एक वेरिएबल है a और उसकी वैल्यू असाइन है 100. सो ऑलवेज उस वेरिएबल की आइडेंटिटी क्या हो गई है कि यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू 100 है. द नेक्स्ट फीचर, वेरिएबल नेम्स. It is the important and most IMP feature of variables. You can give capital A to Z, small a to z, or you can give 0 to 9. Any number or alphabets you can use with variables. A variable can't be begin with digit. कोई भी variable digit से begin नहीं होगा. Here you can see the example of variables like in small letter NAME name and the value is Neelam. And you can see another example here, capital letter of age. And third example you can see add underscore 2. If you want to use any number with your variable name, so you have to use underscore. But 101 underscore takes means आपका जो वेरिएबल है, अगर आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करते हैं, सो वो वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी या फिर वो वेरिएबल कैटेगरी में काउंट नहीं होगा. Python has some reserved word like false, if, del, import, in, true, or not या many more. बहुत सारे 33 रिजर्व कीवर्ड है जो एक टाइम पर किसी न किसी कमांड को परफॉर्म करते हैं. So you can't use that keyword as a variable. Here I have shared with you lots of information about variables declaration and variables rule. इन सभी की हेल्प से आप एक 5 मार्क्स के आंसर को फ्रेम कर सकते हैं. आई होप यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल्स. लेट्स असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. हियर आई एम यूजिंग a एज अ वेरिएबल एंड इक्वल्स टू 10. नाउ टेक अ प्रिंट ऑफ a वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, सो यू हैव टू राइट बिटवीन दी ब्रैकेट्स. Then control plus enter. Here 10 has printed and 10 is the value of a variable. Here you can assign multiple variables in same value.
So A equals to B equals to C and then equals to 100. Take a print of all three variables. Print A, B, C. Control plus enter. So you will see the same value to the different variable. The next example is multiple variables and multiple values. X, Y, Z equals to 10, 20, 30. Now print X, Y, Z. Here I have given x, y and z थ्री वेरिएबल्स का यूज किया है और तीनों वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यू असाइन की है. सो अगर आपको सेम वैल्यू असाइन करना है सो यू कैन सी द 6th रो and if you want to apply the different value so you can see the example of 7th row. Next is the dynamic type, means you can give integer value and the string value to a same variable, like x equals to 10 and again x equals to hello world. Enter, print x. You can see the dynamic value of the x variable. If you want to enter, if you want to input a statement with your variables, so you can do also. You have to give any variable name. I am using here name as a variable equals to input and then bracket and then curly braces. Whatever statement you want to write, you have to write. What is your name? Then you can take a print of name variable. So print name, control enter. Here what is your name? So I can fill my name. So the statement has taken by the variables. Thank you for watching my video. Please like, subscribe and hit the bell icon.